Assalamu alaikum. So, in the last lecture, we have seen the concept of short exec sequences. So, mm, by definition, a sequence of modules a sequence of three modules is called a short exec sequence if it is exact at each point, which is equivalent to say that f is injective and image of f, it is equal to kernel of G and G is surjective. Okay, now today if we will see the relation of the short exec sequences and home. So just try to recall that home of Mn is a set of all R module homomorphism from M to N. So first try to see that whenever we have a map from one module to another module, then we will see that what is the relation between their homes. Okay, so what is the meaning of this thing that let M be a fixed module? Because just try to see that in a short exec sequence, uh, modules are related with the help of R module homomorphisms. So we will try to see that if there exists an R module homomorphism between two modules, then what we can say about an R module homomorphism between their homes, because we know that this home is also an R module. So this no is it is also an R module. We proved it, and we have also seen a few examples related to home. So now what is the point that let M be a fixed R module and N dash be R modules such that F from M to N dash is an R module homomorphisms. Homomorphism. So two things are given: a fixed uh, uh, R module M is given, and two R modules N and N dash can such that F from M to N dash is an R module homomorphism. Now, naturally, uh, try to see that this is N and this is N dash, and F is given uh,
Okay, so now what I'm trying to show that I want to see the relation between home of Mn, because and home of M into and dash. So naturally, I want to see uh, this relation. So what is the meaning of this relation exactly? That is, now this is a set of all homomorphism from M to N, and this is a set of all homomorphism from M to N dash. So for example, let's say this is M. So यहाँ पे सारी homomorphism आ जाएगी. So let's say, so here we have all homomorphism. Let's say beta from M to N dash, and here we have all homomorphism alpha from M to N dash, and sorry. Now we already know that we can there exists a bridge, that is there exists an R module homomorphism from N to N dash. So now with the help of this fixed M, which have here, with the help of this fixed M, we can define a set home here, an R module homomorphism which from Mn, and with the and also with the help of fix M and N dash, I can define an R module homomorphism. Now, what is the point that how can we relate these two? How can we relate these two R module homomorphism? So we can relate with the help of F naturally, because if there exists a map, let's say from M, if there exists a map, let's say alpha from M to Mn. So by taking or R module homomorphism from M to N. So by taking the composition of alpha with M, I can always construct a homomorphism that is F composition alpha from M to N dash. So what is the point that if so I can write this thing in this way, that from home to Mn. In other words, what I can say, that whenever I have an R module homomorphism alpha, which is R module home from M to N. So by taking the composition from F, I will get an R module homomorphism from M to N dash. So here, what I will say that whenever so I want to see a relation. Initially, I want to see a relation between their homes. So what they are saying, that if there exists a map from N to N dash, so this map is also inducing a relation which is F star. So this map is also inducing a relation between homes. And what is a relation that, and what is the relation which is written here, that F, if input is F alpha from M to N, so output, it is equal to alpha composition alpha. So F star, it is defined in this way, that if input is a map from M to N, then output is a map from uh, M to N dash. So since this map F star, it is depending on F, so that's why मैंने इसको F star से लिंक किया. आप इसको किसी और चीज से भी लिख सकते हैं. कुछ जगहों पे इसको ऐसे भी लिखा होता है, home of M F भी लिखा होता है, because again ये वाली notation थोड़ी natural सी है, because now it shows you
that this map is inducing from f star, because here I am computing the outputs with the help of f, and also it is sesses, and it is also inducing an R module homomorphism between homes, which are defined with the help of M. So R module homomorphism are defined with the help of home Mn. So that's why we also have this notation. So what we have seen that whenever we have a map from M to N dash, then after applying a home of Mn on both sides, I will get two R module homomorphism, and this F also relate between. So after applying home, we will have two R modules, and this R module homomorphism F is also inducing an R module homomorphism. Initially, it is inducing a map between these two home modules, and this map F star is also an R module homomorphism. So I am not proving, but it is not difficult to see that F star, which is a map from home of Mn to Mn dash, is an R module. So it is an R module homomorphism. So चले इसको देख ही लेते हैं. तो for this purpose, for alpha beta in home, we can see that F star alpha plus beta, it is equal to, so by definition F star alpha is equal to F composition alpha. So F star alpha plus beta is equal to F composition alpha plus beta, and this is equal to F composition alpha plus F composition beta, and this is equal to F star alpha plus F star beta. Okay, next we have the condition that for R and R, F star R dot alpha, so it is equal to F composition R dot alpha, where R is a scalar quantity, and we know that how can we define R. Now this is equal to R dot F composition alpha, and this is equal to R star F alpha. So it is easy to see that this F is an R module homomorphism. So class, now what is the summary that इसको अगर मैं summarize करना चाहूँ, that whenever so for a fixed module, for a fixed R module M, so whenever we have two R module homomorphism, or whenever there is a R module, there is an R module homomorphism between there is an R module homomorphism between two R modules. So let's say this is an R module and this is an R module. So whenever so for a fixed module R module M, so whenever we have an R module homomorphism from an R module to another R module, so by applying home, so we can apply this home. So this home M is fixed, so we can apply home here, we can apply home here,
So this R module homomorphism F is always induce an R module homomorphism between their homes. तो जनरली आप यहाँ पे इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये एक आर मॉड्यूल्स है और यहाँ पे कोई भी आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, तो वो यहाँ पे एक ये वाली आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे एक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को इंड्यूस करेगी between between R modules which are inducing by homes. So अब next idea ये है कि now what is the effect of applying home on a short exact sequence? Because in a short exact sequence, we have, let's say this is a short exact sequence. So after applying home, so let's say this is F. Here we have F, which is an R module homomorphism from N dash to N, and this is G, which is an R module homomorphism from N to N double dash. So we know that at M and M be a fixed. You can also assume that let M and M be a fixed R module. Now we can apply, तो यहाँ पे रिमार्क इस तरह से करके लिखें that now we can apply this home at each level, यानी कि इस लेवल पे भी होम को अप्लाई करें, इस लेवल पे भी होम को अप्लाई करें, and also we can also apply home at each homomorphism. So apply a home at each So after applying home at each level, so what I will get, यहाँ पे पहले मुझे home of mn dash available होगा at this point, home of n available होगा, and at this point यहाँ पे एक zero map ही available होगा, because one can see that अगर मैं home of m0 ले लूँ तो किसी भी R मॉड्यूल M से जीरो मॉड्यूल के दरमियान सिर्फ जीरो मैप ही मौजूद होगा और कोई मैप मौजूद नहीं हो सकता, तो इट कंटेन ओनली जीरो मैप. तो यहाँ पे जो होम होगा वो सिर्फ एक जीरो मैप होगा, एंड हेयर जीरो मॉड्यूल के ऊपर अगेन मैं होम अप्लाई करूँ तो आई विल जस्ट गेट जीरो मैप. तो अभी मैं इनिशियली जीरो मैप लिख रहा हूँ, बाद में फिर मैं सिर्फ जीरो लिखा करूंगा, तो आप इससे आइडिया लगा देना. एंड अगेन this F is inducing this F is inducing a map F star and this G. Okay, now class try to recall that due to this zero, कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला जीरो अप्लाई ना करूँ तब आप इस मैप की सब्जेक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते. But after introducing this zero, we can say that this map is a
सब्जेक्टिव मैप बिकॉज दिस सीक्वेंस इज एग्जैक्ट। तो जो इसका इमेज है वो जीरो के कर्नल के इक्वल होना चाहिए, तो कर्नल ऑफ जीरो जीरो के इक्वल होता है। ओके, तो दैट्स वाई जो इमेज ऑफ जी है, सॉरी कर्नल ऑफ जीरो बेसिकली पूरा एन डबल डैश होता है, तो दैट्स वाई इमेज ऑफ जी पूरा एन डबल डैश के बराबर है। सो एक्चुअली ये जीरो इस बात की गारंटी दे रहा होता है दैट दिस मैप इज सब्जेक्टिव, एंड ये जीरो इस बात की गारंटी दे रहा होता है दैट दिस मैप एफ इज इंजेक्टिव। और बाकी शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस के लिए एक और कंडीशन होती है दैट इमेज ऑफ एच इज इक्वल टू कर्नल ऑफ जी। अब ये वाली चीज एक्चुअली एक थ्योरम है जिसको मैंने इनिशियली थ्योरम की फॉर्म में थ्योरम मेंशन नहीं किया था कि लेट सो इन दिस थ्योरम व्हाट इज गिवन दैट a short exact so this thing is given, a short exact sequence is given, a short exact sequence is given, and a fixed R module is given. Then what they are saying that after applying that after applying home and each level, you will get again. So we will again get a sequence, but now this sequence. So in general, in this sequence, this map f star is injective, and also it is exact at this level, that is image of f star is equal to kernel of g star, but g star may not be a surjective map, so that's why हम अब ये बात कहते हैं कि ये वाली सीक्वेंस क्या होगी, इज एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम जीरो इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, तो जीरो इस वजह से ऑल्दो ये सीक्वेंस एग्जैक्ट है, इज अ शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस, सो देन वो थ्योरम ये कहता है कि इफ थ्योरम ये कहता है कि इफ this is a this is a short exact sequence, if this is a short exact sequence of R modules and MBFX R module, then this is exact। तो इसके एग्जैक्ट होने का मतलब क्या कहलाता है कि यहाँ पे एफ स्टार क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। एफ स्टार is injective and image of f star, so दो कंडीशन होल्ड होंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ। It is equal to kernel of g star। सो ये जो थर्ड कंडीशन होती है, तो यहाँ पे मैं रिमार्क लिख देता हूँ दैट it is not that after applying this home, it is not necessary that G star is subjective. So this is a theorem that after applying this home on a short exact sequence, a short exact sequence may be exactly not a short exact sequence, but still since this G star will not be a subjective map, but still ये वाली दोनों चीजें होल्ड करेंगी कि एफ स्टार इंजेक्टिव ही रहेगा एंड इमेज ऑफ एफ स्टार इट इज इक्वल टू कर्नल ऑफ जी स्टार। अच्छा, इसकी पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं दैट
So class, any problem in the statement? So what? So इसको अगर आप summarize कर लें किसी लाइट उससे, that if a short exact sequence in a fixed R module M is given, so after applying this home, the induced sequence and the induced sequence is available by applying home at each level, and by applying home and by taking induced map uh, uh, between home modules. So what they are saying that this induced sequence is just exact. So I removed 0 here. So and then I'm saying that it is exact. So it's mean that here F star is injective. Image of F star is equal to kernel of G star. Since 0 is not here, so that's why it is not necessary that G star is surjective. So now I will give you an example which shows that G star is not necessarily a So consider a short exact sequence in this way that 0 to 2z, c and c2. So we know that this is a short exact sequence here. This is an inclusion map. There F is an inclusion map and G is a uh, surjective map. So we know that this is a short exact. So here F, so this is an inclusion map, and this is a natural map from C to C2, which take every integer to the modulo class 2. Okay, so let M it is equal to C2, because हमें एक short exact sequence लेना पड़ती है. Theorem क्या कहता है कि short exact sequence लेंगे, and then we will take a fixed module M and applying home at each level. So let M is equal to Z2. Now applying home at each level, so what I will get home of C2 to 2Z, and also I will get okay. Now in this example, so first we will try to compute these homes कि ये home exactly क्या है, and then we will try to compute F star between because F यहाँ पे है inclusion में पे, तो F star compute करने की कोशिश करेंगे, and also we will try to compute G star.
So class, any idea what you can say all R modules homomorphism from Z2 to Z? इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि Z2 Z के दरमियान कितने R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स होता है? क्या कोई give me an R module homomorphism from Z2 to Z? Z2 to Z. कौन कौन है? अलीना, आरफा, इमरान, मिसबा? सर सोच रहे हैं। अच्छा, सर वो इवन एंड ऑड वाला कर सकते हैं क्या? आप अगर हाँ, आप देखने की कोशिश करें कि इवन एंड ऑड वाला कर सकते हैं। तो अब एक्चुअली जैसे अगर Z2 1 है तो मतलब इट implies all odd numbers. आप फिर देखिए वो आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म अगर वो मैप है कि नहीं, क्योंकि अगर एक इनपुट के कई आउटपुट आ रहे हैं। Right. हाँ, अच्छा सर x mod 2 अच्छा लेट से मैं एक मैप लेता हूँ C2, एक जनरली मैप लेता हूँ। लेट अल्फा बी एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ओके, फ्रॉम Z2 to Z, बी एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई अल्फा वन का कोई ना, अगर ये आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो C2 में कोई दो एलिमेंट है, 0 बार एंड 1 बार, तो अल्फा 1 बार का कोई ना कोई एलिमेंट x होगा, और x क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ओके, नाउ बाय डेफिनेशन व्हाट इज अल्फा 1 बार प्लस 1 बार? so it is equal to on one side it is equal to alpha of 0 बार, और हमें पता है एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म 0 को 0 में मैप करते हैं, so it is equal to the 0, and on the other side it is equal to alpha of 1 bar, since it is an R module homomorphism 1 bar, so it is equal to x plus x, and it is equal to 2x. So from here, if 2x is equal to 0, which implies that x is equal to 0, it's mean that that is alpha 1 bar, it is equal to 0, which implies that map it is equal to 0. So class, what I proved that simply that whenever you will take an R module homomorphism, it will always have 0 map. So actually what is the conclusion from here? That home of Z2 to Z, or you can say that there exists only a 0 module homomorphism. So there exists only a 0 module homomorphism, a 0 module homomorphism. Yes, okay. Or there exists only a 0 map, और इसको आप ब्रैकेट में लिख दे R module homomorphism from Z2 to Z. So that is home of Z2 to Z. It is equal to only contain a single element, which is a 0 map. Okay. So यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने ये चीजें ये इसको कंप्यूट कर लिया कि Z2 Z में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, 0 एलिमेंट मौजूद होता है। So that's why अब मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा। अच्छा यहाँ पे अच्छा इनिशियली ये Z2 to Z था ये वाला, क्योंकि ये वाली
सर ये तो 2c के इक्वल थी ना, यहाँ पे 2c आएगा, बट स्टिल ये रिजल्ट इसी तरह से होल्ड रहेगा कि C2 to C में भी जीरो मैप है, तो ये भी जीरो मैप ही रहेगा, and this is a zero map. And what you can say about Z2 to C, so it contains actually two maps, zero map and the identity map. Identity map जो exist कर सकते हैं, so it contains two elements, zero map and the identity map. Up now class, if this is a zero map and this is a zero map, so it shows that F star is also a zero map, so which implies that F is injective, क्योंकि zero map injective होता है, so that's why we can introduce zero here. And also you can see that image of F star which has zero map, it is equal to, अच्छा यहाँ पे G star भी क्या होगा, zero map ही होगा, because ये भी zero module है ना, तो zero module से जो भी map define कराएंगे वो zero map ही होगा. So also you can see that image of F star which is zero, it is equal to the kernel of G star which is also equal to zero. So ये दोनों elements भी सारे modules भी zero के equal आ गए. ये वाला मॉड्यूल भी जीरो के इक्वल आ गया, ये मॉड्यूल भी जीरो के इक्वल आ गया, तो इंड्यूस जो मैप से वो भी जीरो के इक्वल आ गया. बट द मॉड्यूल विच इज हियर home of Z2 to Z2 contains two elements. Now class try to see that this identity element doesn't has a pre-image because दिस इज अ जीरो मैप. तो जीरो मैप में जब मैं इमेज लूंगा, आप और इस तरह से भी ले सकते हैं कि इमेज ऑफ जी स्टार, सो यू कैन सी दैट इमेज ऑफ जी स्टार इट इज इक्वल टू जीरो एंड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इनटू द आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी का कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, so that's why we can say that G star is not a surjective map. So that is the pre-image of the, और इसको आप moreover इसको identity of 2 लिखते हैं, और ये C2 का element था. So what you can say the pre-image of the, because ये identity map है Z2 के दरमियान of the identity map which is from C2 to Z2, that is the identity of 2 from home from C2 to C2 doesn't exist under G star, which is a zero map, which implies that G star is not a surjective map. Okay, so this example shows you, although मैंने इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करवाया, इस थ्योरम का एक प्रॉपर प्रूफ अवेलेबल है, अगर कुछ टाइम मिला तो मैं आप लोग को इसको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा. That after applying home, we can prove that this F star is always injective, and also this condition holds that image of F star it is equal to kernel of G star, but it is not necessary that G star is surjective. तो इस एग्जाम्पल से मैंने शो कर दिया कि जी स्टार का सब्जेक्टिव होना जरूरी नहीं है. दिस एग्जाम्पल ऑल्सो वेरीफाई इज दैट F is injective and image of F star it is equal to kernel of G star, but this is not a proof. एग्जाम्पल कभी प्रूफ नहीं होती. हाँ, डिसप्रूफ करने के लिए जैसे मुझे शो करना था कि G star
का सब्जेक्टिव होना जरूरी नहीं है। तो डिस्प्रूव करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दे दी that it shows that G star is not a surjective map, but प्रूफ करने के लिए हम लोग को इस फिल्म में देखना पड़ेगा that F star is injective and image of F star it is equal to kernel of G star. ओके सो यहाँ पे मैं हरमान ले देता हूँ that to prove the theorem we need to show that F star is injective and image of F star it is equal to kernel of G star. ओके तो अभी के लिए ये जुमला आप लोग के लिए लिख देना, ये बड़ा मशहूर जुमला है। It is left as an exercise. Okay, now class now the next topic क्योंकि मैं इसको तभी छोड़ रहा हूँ कि मुझे एक चीज टॉपिक कंप्यूट करवाना है। So now we are interested on those R modules M such that after applying G star, अब मोटिवेशन हमारी क्या है? That generally मुझे पता है that G star is not a subjective map after applying home, but if after so we are interested in R module SEM. So we are interested in R in an R or in R modules M such that G star. So we know that in general G star is not a surjective map such that G star is a that is इसको मैं अब explain कर दूं that is uh, that is in a short in a that is in an arbitrary short exact sequence सो हमने जस्ट क्या देखा था कि अगर हम होम अप्लाई करें तो जो शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस में जब हम लोग होम अप्लाई करें तो इट इज नॉट नेसेसरी जो इंड्यूस सीक्वेंस है दैट इज अ शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस बिकॉज द आर module homomorphism on the right side which is G star may not be a surjective map but actually हम उन R modules में interested हैं जिनमें हम दैट इज जिनमें हम होम अप्लाई करने के बाद वो शॉर्ट एग्जैक्ट ही रहे दैट इज जी स्टार सब्जेक्टिव है सो दैट इज in an arbitrary short exact sequence after applying home the induced sequence
will also be a short exec, क्योंकि अब G star subjective रहेगा तो दोबारा induced sequence क्या रहेगी, also be a short exec sequence. So this leads to the definition of the projective modules that सर थोड़ा ऊपर करेंगे. जी. हो गया सर. अच्छा अच्छा चलो ठीक है फिर. So now this leads to the definition of projective modules. So an R module M. तो प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स वही मॉड्यूल्स होते हैं जिनके लिए जो शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस होती है उनमें अगर होम अप्लाई करें देन जो इंड्यूस सीक्वेंस है वो भी क्या हो, शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस ही रहे. तो एक्चुअली इस टाइप के जो मॉड्यूल्स हैं एम है कि जिनका होम अप्लाई करने के बाद किसी भी आर्बिट्री शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस है में अगर हम होम अप्लाई करें तो वो आर्बिट्री शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस शॉर्ट एग्जैक्ट ही है. सो एन आर मॉड्यूल एम is called projective R module if for any short exec sequence if for any short exec sequence the induced sequence is also a short exec sequence. Initially we have seen जैसे हमने ये वाले एग्जांपल में देखा था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इंड्यूस सीक्वेंस हो वो शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस हो बिकॉज जी स्टार का सब्जेक्टिव होना जरूरी नहीं है. But here in the case of a projective module, by definition the induced sequence will also be a the induced sequence, okay, is also a short is also a short the induced sequence that is अगर आप ये वाली induced sequence लें 0 to home to M and dash F star home of Mn and G star home of, यहाँ पे n डबल डैश था n डबल डैश. तो अब यहाँ पे हम 0 इंट्रोड्यूस करवा देंगे इस is a short exec sequence. And what is the meaning of this thing? That this F star
is injective. Image of F star, it is equal to kernel of G star. And number 3 condition that G star is surjective. Now actually ये दो conditions हैं जो initially first two conditions हैं, ये तो हर वक्त hold करती है because वो theorem है जिसका हमने proof नहीं किया हुआ, but actually this condition holds whenever we have a short exact sequence, that or whenever we apply home on a short exact sequence, but this condition that G star is surjective, this condition holds when M is a projective module. So this condition doesn't hold in general, but this condition that G star is surjective holds in the case of projective modules. So that's why what we can say that this whole condition of the projective, this whole condition, this the definition of the, so this is the main condition for M to be a projective module. So we can take an equivalent definition of a projective module, that M is a projective R module. Because यहाँ पे we know अब ये कि अगर मैं कोई सी भी आर्बिट्री सीक्वेंस लूं, शॉर्ट एक्सेस सीक्वेंस लूं, सॉरी तो ये वाला मैप क्या होता है, ये दिस मैप इज अ सब्जेक्टिव मैप, यानी कि यहाँ पे ये एक मैप सब्जेक्टिव होता है। तो प्रोजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन है कि ये मैप जी स्टार भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो दिस इज द मेन कंडीशन। सो दैट्स व्हाई मैं सिर्फ ये वाली कंडीशन से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट एम इज अ प्रोजेक्टिव आर मॉड्यूल if for any surjective map, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, if for any surjective map after applying home, I will the induced map is also a surjective map. So if for any surjective map G from n to n double dash the induced map G star from home of Mn to home of Mn dash is also a surjective map. Okay. So अब अगर ये मैप ये बात हमें बहुत इजीली समझ में आ गई है, बिकॉज जब हम शॉर्ट बिकॉज प्रोजेक्टिव मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या है, दैट M is a projective module if after applying home on any arbitrary short exact sequence, the induced sequence should also be a short exact sequence. But we know that induced sequence के short exact sequence के लिए 3 conditions होती हैं. So 2 conditions तो हमेशा होल्ड करती है, भले ही मॉड्यूल प्रोजेक्टिव हो के ना हो. These first 2 conditions hold for any R module M. But the third condition holds only for the projective module, that G star is surjective. So that's why हमने इसको एक equivalent definition ये ले ली, that here M is a projective module if for any surjective map
the induced map is also a surjective map. Okay, now we will try to see one more equivalent definition. Now, if this map is a surjective map, so what is the meaning of this thing? That whenever we have a map beta from M to N dash, there exists a pre-image of beta, that is there exists alpha from M to N, because यहाँ पे कोई alpha exist करेगा, such that G star alpha it is equal to beta, or you can say that G composition alpha it is equal to beta. So actually ये वाली जो condition थी that G star is surjective map, so ये जो surjectus की जो condition है, it could also written in this way, that for beta an element which is here, that is a map from M to N dash, there exists for this thing there exists an alpha which is a map from M to N, which is a pre-image of beta. That is, जैसे ही मैं alpha का image लूंगा, it is equal to beta, so G composition alpha it is equal to beta. So using this thing, we can introduce also an equivalent definition that M is an R, so M is a projective R module if अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि for any if for any beta so condition क्या if for any beta which is a map from M to N dash, if for beta from M to N dash, there exists alpha from M to N such that F composition alpha it is equal to G composition alpha it is equal to beta. So मैंने इसी कंडीशन को, ये जो ऊपर मैंने जो हाईलाइटेड कंडीशन थी येलो में, इसी कंडीशन को बस मैंने यहाँ पे लिखा है कि whenever we have a beta from M to N dash, so there exists alpha from M to N such that G composition alpha it is equal to beta. So अगर इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में लिखूं तो ये मुझे इस तरह से नजर आएगी that whenever we have a map from M to N dash, okay, so let's say this map is equal to beta,
then I can always and you know and this is n, and we know that G is a map from n to n dash, and since and it is given that G is a surjective map. So what they are saying that I can always find a map m to n which is alpha, such that alpha G composition alpha it is equal to beta. तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या करिए, इसको कहते हैं डायग्राम को कम्यूट करना, कि whenever I will move from here to here और I will move from here to here, दोनों का जो आंसर आएगा सेम ही आएगा. इवन इसको डेफिनेशन को रिफाइन इस सेंस में भी कर सकता हूँ कि इफ क्योंकि यहाँ पे जी गिवन है, इफ फॉर एनी जी फ्रॉम n to n dash, if for a subjective, और जी का subjective होना जरूरी है. If for a subjective R module G from M to N and beta and R module homomorphism from M to N dash, कि ये फिक्स है. If for if for any surjective map which is from M to N dash and beta is an R module homomorphism from M to N dash, so we can always find out alpha from M to N such that this diagram commutes. So in other words, we can also say that we can always lift we can always lift this map. Lifting का मतलब ये कि बीटा अगर m to m dash है तो हम इसको हमेशा लिफ्ट ऊपर की साइड ले आके m to n पे एक मैप डिफाइन कर सकते हैं. So this alpha it is also termed as a lifting of beta. That is this map beta, इसको हम लिफ्ट करके ले जा सकते हैं अल्फा के ऊपर. So condition ये है that if G is a surjective map, so let's say it is given that G is a surjective map from M to N dash, and if beta is given from M to N, so M के प्रोजेक्टिव होने के लिए कंडीशन ये है कि हम इस मैप को हमेशा लिफ्ट करके M to M में ले जा सकते हैं. So class, just try to see that all these three conditions are equivalent conditions for M to be a projective module. Initially what we have seen that M is a projective module if after applying home a short exact sequence should be a short exact sequence. So this is the necessary condition because first two condition hold for any arbitrary module M. So G star is a surjective map. So if this G is a surjective map on a short exact sequence, then this G star should be a surjective map. So now this is equal to say that R module M is a projective R module. If for any surjective map, the induced map is also a surjective map. And this condition could also be written in this map that if for a surjective R module, M is a projective R module, if for a surjective R module M, which is here, so whenever a beta is given, which is a map or an R module from M to N dash, you can always find out its pre-image. And what is pre-image? If pre-image is an alpha, which is an R module homomorphism from M to N dash, such that its composition with G is equal to beta.
So this is the definition, or these are the equivalent conditions defining a projective R module. Now, initially, what we have seen that after applying Ohm, initially what we have seen that if we take M is equal to C2, and if you take this short exact sequence, that what we have seen that after applying Ohm कि ये वाला जो मैप है, ये जो नेचुरल मैप है, ये सब्जेक्टिव नहीं रहेगा. Initially it is subjective, but after applying Ohm, on G, तो ये वाली जो कंडीशन है, initially this is subjective, but after applying Ohm here, it is not. Our subjective map which shows that this G star which and this implies that this M it is equal to C2 is not a projective C module, because ये Z module की projective की condition है that after applying Ohm on a subjective map, जो induced diagram है वो भी, जो induced map है वो भी between Ohm modules subjective होना चाहिए. And we know कि ये इस वजह से नहीं होता था because यहाँ पे सिर्फ zero map होता था और यहाँ पे दो मैप होते थे, zero map and the identity map. So, or you can say, in other words, you can also say कि identity map की कोई lifting मौजूद नहीं है, because initially from Z to C to तो ये एक natural map G मौजूद है. Okay, zero इस वजह से introduce कराता हूँ, it just shows that this zero, that this map is a subjective map. So ये जो G map था ये तो subjective map था जो natural map था. So अब Z2 to Z के दरमियान आइडेंटिटी मैप प्रेजेंट है, बट सिंस C2 और Z के दरमियान सिर्फ जीरो मैप एग्जिस्ट करता है, सो दैट्स व्हाई इस आइडेंटिटी मैप की कोई लिफ्टिंग मौजूद नहीं है. सो व्हाट यू कैन से दैट देयर डजंट एग्जिस्ट अ लिफ्टिंग ऑफ कि ये वाला जो मैप है आइडेंटिटी 2 की, यहाँ पे कोई ऐसा मैप नहीं है कि जो इसकी लिफ्टिंग बना रहा हो, बिकॉज C2 टू C में सिर्फ जीरो मैप मौजूद होगा. तो अगर मैं यहाँ पे जीरो मैप ले लिया तो इसकी अगर मैंने कॉम्पोजिशन करी तो आफ्टर कॉम्पोजिशन दिस जीरो मैप विद G आई विल गेट अ जीरो मैप. तो जो कॉम्पोजिशन मिलेगी वो जीरो मैप मिलेगी और जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो सबसे आसानी से इस वजह से देखा जा सकता है कि हमेशा हर एक मैप की आप लिफ्टिंग क्रिएट कर लें. तो जैसे ही अगर आप इसकी लिफ्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, सो सो लिफ्टिंग क्रिएट करने में के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैप है, ये वाला जो मैप है, ये प्रोजेक्टिव मैप है कि नहीं, क्योंकि हर मैप की आपने लिफ्टिंग क्रिएट करनी है. अब एक इसकी एग्जांपल भी देख लेना. ओके, सो ओके, लेट्स से M को अगर मैंने अब Z के इक्वल ले लिया. अब अच्छा, मुझे अगर नॉट शो करना था तो मैंने किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल के जरिए शो कर लिया.
मगर अगर मुझे इसको एग्जैक्टली शो करना है कि दैट एम इज अ प्रोजेक्टिव मॉड्यूल, तो मुझे जनरली एक सब्जेक्टिव मैप लेना पड़ेगा फ्रॉम एम टू एन डैश. So this G is a surjective map. This G is a surjective map. और यहाँ पे मैंने C put किया. और what I need to show that here every map which is from C to N, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडीशन है कि इस मैप की क्या होगी, लिफ्टिंग मौजूद होगी. तो लेट्स से एक मैप यहाँ पे बीटा प्रेजेंट है एंड व्हाट आई नीड टू शो दैट इस मैप की यहाँ पे कोई मुझे लिफ्टिंग दिखाना है which is a map from which is a map from Z to N and such that this diagram commutes. Okay, so इसको हम इस तरह से सॉल्व देखने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से one, we know that one is an element of Z. Okay, all, and here we are all considering that all modules are Z modules. So here R it is also equal to Z. So Z is a Z module, N is a Z module, N dash is a Z module. So all modules are Z modules. Okay, so in this case, we know that one is an element of Z. So I can take the image of one here. मैं इसको ऑलरेडी सब्जेक्टिव लिख रहा हूँ तो जीरो लिखने की इतनी जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे वन का फिर इमेज में ले सकता हूँ which is equal to beta of 1. Okay, now beta of 1 is an element of n dash. Now if this G is a surjective map, so there exists a pre-image of beta 1. That is, you can say that there exists some element you can let's say X here. There exists something X here such that image of G under X is equal to beta of 1. ये beta of 1 के बराबर है. Okay, now I am defining a map. So define a map. तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ that since G is surjective, it implies that there exists X in N such that image of G under X is equal to beta of 1. Now the next thing is define. मैं एक मैप एक चीज डिफाइन करवाना चाह रहा हूँ, एक ऐसा मैप डिफाइन करवाना चाह रहा हूँ अल्फा कि एक कि मैंने अल्फा फ्रॉम डिफाइन अ मैप अल्फा फ्रॉम C to N such that सिर्फ मैंने एक मैप डिफाइन करवा ली है कि जो वन से कि जो जिसका जो वन का जो इमेज है वो x के इक्वल है. कि ये वही वाली सूरत-ए-हाल है कि अगर आपको बेसिस में अगर आपको बेसिस का इमेज मालूम हो तो आप किसी भी एलिमेंट का इमेज मालूम कर सकते हैं. तो जस्ट मैंने क्या काम किया कि एक मैप को मैंने डिफाइन किया और इसकी बेसिस को लेके बिकॉज वी नो दैट Z इज अ फ्री मॉड्यूल
सो वन जो एलिमेंट होता है वो इसकी बेसिस होता है, तो दैट्स वाई मैंने वन का पहले इमेज लिया, यहाँ पे जो बीटा वन आ गया उसका प्री इमेज यहाँ पे एक्स लिया। तो अब मैं मैप डिफाइन करा रहा हूँ बाय टेकिंग द इमेज ऑफ वन इट इज इक्वल टू एक्स। सो जैसे ही मैं किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट का किसी n का इमेज लूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, nx के इक्वल आ जाएगा। So now what is my claim that this and the map which I defined here. So what is my claim that this alpha is a lifting of beta. This alpha is a lifting of beta. क्योंकि अल्फा को मैं इस तरह से डिफाइन करा सकता हूँ बाय जस्ट डिफाइनिंग द इमेज ऑफ वन विच इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज एक्स मुझे पता है एक एलिमेंट है n के अंदर। तो मैं जब वन का इमेज x डिफाइन कराऊंगा तो मैं किसी भी एलिमेंट का इमेज n का इमेज क्या डिफाइन करा सकता हूँ, nx डिफाइन करा सकता हूँ। So this alpha is a well defined map. This alpha is a well defined map. Now what is my claim that this alpha is a lifting of beta? Now you can check easily but why this alpha is lifting of beta, because what I need to prove कि जब मैं पहले अल्फा अप्लाई करूं एंड देन जी अप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, बीटा आना चाहिए। तो चले पहले यही काम हम वन के साथ करते हैं कि वन का इमेज मेरे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स का इमेज मेरे पास क्या आ गया, बीटा ऑफ वन आ गया। तो देखिए ये भी तो बीटा का इमेज क्या होगा। सो एक्चुअली अंडर अल्फा image of 1 it is equal to x, and under g image of x it is equal to beta 1, and image of 1 under beta it is also equal to beta 1. सो आप चाहे तो यहाँ से मूव करें कि पहले अल्फा अप्लाई करें और फिर जी अप्लाई करें तो आप बीटा वन में पहुंचेंगे, डायरेक्टली बीटा अप्लाई करें वन पे तो आप बीटा वन में पहुंचेंगे। इट्स मीन दैट दिस डायग्राम इज कम्यूटिंग ऑन वन। सो डायग्राम इज कम्यूटिंग ऑन वन, तो वो फिर किसी भी एलिमेंट के ऊपर डायग्राम कम्यूट करेंगे, बिकॉज अगर कोई भी एलिमेंट में एन लूंगा तो इसका इमेज मेरे पास क्या आ जाएगा, एन एक्स आ जाएगा, और इसका जो इमेज आ जाएगा वो एन बीटा ऑफ वन आ जाएगा, और यहाँ पे n का भी इमेज क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ वन ही आ जाएगा। So which shows that this diagram is commuting. So this shows that alpha is a lifting of beta. So overall, what we have seen that initially m it is equal to c. So what we have seen that for any surjective map, if there exists an R module homomorphism from n to n dash, if there exists an R module homomorphism from z to n dash, so we can always lift. So there exists a lifting from z to n such that this diagram commutes. So class, actually we can generalize this example and prove that any R module M, any free R module M is a projective R module. So again टेक्निक हमारी वही रहेगी जो मैंने अभी टेक्निक की थी, इसी को जनरलाइज करूंगा कि I will take this G as surjective map from n to n dash, because मुझे जनरली इसको प्रूफ करना है, and M, and there exists a map which is an R module homomorphism from M to n dash, and this n and n dash are also R modules.
So I need to show that इस map की क्या है lifting exist करती है. Now since I am assuming that this M is a free module, तो इसकी कोई ना कोई मेरे पास क्या होंगी, let's say इसकी कोई ना कोई मेरे पास बेसिस होगी. लेट्स से x गामा इसकी बेसिस है. नाउ वहां पे भी मैंने क्या किया था, वन बेसिस थी तो मैंने वन का इमेज ले लिया था बीटा ऑफ वन. तो यहाँ पे भी मैं इसके बेसिस का इमेज ले लूंगा विच इज इक्वल टू बीटा ऑफ x गामा. Now again G is a surjective map. So if G is a surjective map, तो इसकी बेसिस का कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा. So B beta gamma so each beta gamma has a pre-image. So each beta gamma has a pre-image under G. Why? Since G is a surjective map, that is there exists y gamma, you can say, that is there exists y gamma in N such that image of G under of y gamma it is equal to x gamma. तो ये अब मेरी यहाँ पे assumption आ गई है that यहाँ पे मेरे पास एक सेट एग्जिस्ट कर रहा होगा which is equal to y gamma such that image of y gamma it is equal to b gamma under G. Now again using the same technique, define a map alpha from M to N such that image of x gamma, तो यहाँ पे x gamma मौजूद है, यहाँ पे y gamma मौजूद है, तो जस्ट मैं ये डिफाइन करा रहा हूँ image of y gamma. Now again since map, so x y gamma का इमेज किस में आ रहा है, x gamma इमेज किस में आ रहा है, y gamma पे आ रहा है. So again यहाँ पे एक रिमार्क लिख रहा हूँ कि alpha is defined तो यहाँ पे फ्री मॉड्यूल का होना हम यूज करें. अल्फा इज डिफाइंड ऑन अ बेसिस ऑफ एम, सो इट कुड बी एक्सटेंडेड टू एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एन. सो अगर बेसिस के ऊपर डिफाइन है तो इसको मैं पूरे मॉड्यूल्स के ऊपर बाद में डिफाइन कर सकता. Now what is my claim that this alpha is a lifting of beta. फिर इस क्लेम को मैं किस तरह से प्रूफ कर सकता हूँ, अगेन इजीली, बिकॉज अगेन यहाँ पे x गामा का जो इमेज है वो किसके बराबर है, y गामा के बराबर है, और y गामा का जो अंडर अल्फा एंड y गामा का जो इमेज है वो किसके बराबर है, अंडर G इट इज इक्वल टू so image of y gamma it is equal to bx gamma, और x गामा का जो इमेज है वो भी अंडर बीटा किसके बराबर है, bx गामा के बराबर है. सो इट शोस ये जो डायग्राम है ये कम्यूट करी है. सो दैट्स व्हाई this alpha which is defined here it is the lifting of beta. जो अल्फा यहाँ पे डिफाइन जो किया है it is the lifting of beta which shows that this M is a projective module. So a free R module M is also a projective module. Okay class, but the converse is not true.
So try to find an example which shows that the converse is not true. That is a projective module. A free module is always a projective R module, but it is not necessary that a projective module is always a free module. ओके सो यहाँ पे मैं अब लेक्चर को ख़त्म करूँ तो आपको फिर मैं एक कुछ तो फिर मैंने आपको असाइनमेंट एक दिया हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप लोग इन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स या दूसरे टॉपिक से रिलेटेड तो थैंक यू क्लास ओके सर, अल्लाह हाफिज।